हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ मिड टर्म पेपर्स ऑफ नवंबर 2022 फोर्थ सेमेस्टर के मॉर्निंग आफ्टरनून दोनों के हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सो बिगिन विद लिटरेरी प्रोज। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स इन द एसेस ऑफ चार्ल्स लैम विच इन्वोक अ स्ट्रेंज बट स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ पैथोस एंड ह्यूमर। Explicate and substantiate your response with three particular एग्जाम्पल्स फ्राम हिज एसेस। ये पार्टिकुलर टॉपिक का मैंने जो है अपने वीडियोस के अंदर कवर अप किया है, आप वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस जॉन रस्किन्स डिफरेंशिएशन बिटवीन वर्क एंड प्ले, हाईलाइटिंग द क्रिटिकल रिलीजियस एंड एथिकल प्रोस्पेक्टिव्स ही लेंड्स टू द सब्जेक्ट। रोमांटिक एंड विक्टोरियन पोइट्री का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ डिटेल नोट ऑन यूज ऑफ नेचुरल इमेजरी इन ब्लैक्स पोइट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू हिज पोएम द टाइगर एंड अ पॉइजन ट्री। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन टू ऑफ देम, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है। पार्ट ए है, सो ट्वाइस 5 miles ऑफ द फर्टाइल ग्राउंड विद वॉल्स एंड टावर्स वर गर्डल राउंड। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है ये कहाँ से लिया गया है, आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा। सो पार्ट बी जो है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। ये भी पार्ट सी जो है, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइटी। इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप मॉर्निंग आफ्टरनून का तकरीबन सिमिलर है, क्वेश्चंस रिपीट है। सो क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट ए, एन अपॉर्चुनिटी इज अ फेवरेबल सेट ऑफ circumstances that create a need for new businesses. Describe the ways to identify an opportunity and also mention the essential qualities of an opportunity. और इसका पार्ट बी है, देयर आर मेनी रीजन्स वाई पैशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी एंटरप्रेन्योरशिप। एक्सप्लेन ऑल दोज रीजन्स in detail along with valid examples. और इसका क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट ए, a workable business plan is written before startup of any business. मोस्टली ये पास पेपर से रिपीट होते, पार्टिकुलरली इस सब्जेक्ट के और रिसर्च के। and often called a selling document for a new firm. Briefly explain its importance and all the contents. और इसका पार्ट बी जो है, the competitors play a pivotal role in the analysis of our own industry. Explain industry analysis with examples, keeping in mind the 5 forces model. Modern novel का क्वेश्चन नंबर 1, discuss Joseph Andrews as social satire. और क्वेश्चन नंबर 2, how is Elizabeth's feminism placed in the contrast to other females characters in the novel Pride and Prejudice, discussed with reference to socially imposed gender norms of Regency England. Introduction to research methodology. Question number 1, read the following and write 2 research questions and statement of problem. राइट, ये पढ़ के करना है। और क्वेश्चन नंबर 2, राइट डिटेल नोट ऑन द फंक्शन ऑफ लिटरेचर रिव्यू या सिग्निफिकेंस ऑफ लिटरेचर रिव्यू भी आप कह सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फिल इन द फॉलोइंग फिगर टू आइडेंटिफाई द 8 स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस इन सीक्वेंस। जो 8 प्रोसेसेस है उनको आपने सीक्वेंस में लिखना है। अभी आफ्टरनून के पेपर्स डिस्कस करते हैं। बिगिन विद द फर्स्ट पेपर जो कि एंटरप्रेन्योरशिप का है। तकरीबन वही मॉर्निंग वाला ही है एंड मोस्ट क्वेश्चंस वही रिपीट है। सो वही क्वेश्चन नंबर 1 सेम अपॉर्चुनिटी वाला। एंड क्वेश्चन नंबर 2, entrepreneurs ought to be innovative in terms of personal characteristics and describe the importance of creativity along with its dimension. और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है जी, एक्सप्लेन इन डिटेल myths about entrepreneurship and what are the types of competitors that a new venture faces. और पार्ट बी जो है वही रिपीट हुआ है, बिजनेस प्लान इट्स सेलिंग डॉक्यूमेंट, ब्रीफली नरेट द कंटेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान के जो सारे कंटेंट्स है ब्रीफली उनको आपने डिस्कस करना है। And then introduction to research methodology. Question number 1, write a short note on followings. पहला है characteristics or the qualities of a good researcher. और part B, identifying and selection of a research problem. और question number 2 है जी,
how far it is important to read or study the relevant literature before selection of a research topic, discuss the role of literature review in shaping the methodological framework of any study. एंड देन आपके पास आ जाता है नॉवल का पेपर क्वेश्चन नंबर 1 हैप्पीनेस इन मैरिज इज entirely a matter of chance. How far do you agree with the Charlotte's view of matrimony in Pride and Prejudice? Discuss it while keeping in view the socio-economic context of 18th century. और पार्ट 2 है इसका Great Grind's educational philosophy entail no room for imagination and hence an outright rejection of literature that runs counter to Sissy's world of fantasy and imagination in hard times. Discuss मोस्टली ये भी रिपीट हुआ है पास्ट से पेपर से. Literary prose क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. पहला जो है लाइन्स ये लिए गए हैं आफ्ट्रूथ बेकन के जो ऐसे है आफ्ट्रूथ उससे. But I cannot tell the same truth is naked and open daylight. और पार्ट भी जो है and how he used to carry me upon his back. Again ड्रीम चिल्ड्रन चार्ल्स लैम की. और क्वेश्चन नंबर 2 है जी Bacon is the greatest of the English essayists of the informative, impersonal and didactic kind, whereas Charles Lamb is the master of personal essays. Critically analyze the uniqueness their essays bear with the examples of relevant examples. Obviously उनके writing style उनके essays के अंदर आप discuss करेंगे. Romantic and Victorian poetry, explain the given lines with reference to context. पहला जो है विलियम ब्लैक की टाइगर से लिया गया है ये लाइन्स. टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट. और दूसरा जो है Our birth is but a sleep and forgetting the soul that rises with us our life's star. I don't exactly remember. झूठ बोल के मैं आपको नहीं कहूँगा कि कहाँ से लिया गया है. आपने रिसेंटली पढ़ा है, मैंने बहुत पहले पढ़ा है ये सब्जेक्ट, सो एग्जैक्टली हर चीज़ याद नहीं रहता. एंड थर्ड इट वाज एन अबासिनियन मेट. ऑब्वियसली कुबला खान से लिया गया इसका जो सेकंड पार्ट था जिसमें डल सिमर द गर्ल विद द डल सिमर. एंड क्वेश्चन नंबर 2 द बर्ड्स song translate inspiration into something that the outside world can understand like art. The nightingale singing is changeable and renewable, and it is music that is organic, not made with machine. Write a comprehensive note on kids literary aesthetics and his belief in the power of art and poetry in the light of his work or to Nightingale. So this is all. Thank you for watching. You can get the papers link in the description.